All right, so let's start today's session. Welcome everyone to the final session of the Big Data Week being held by Confiz. Today's session, Introduction to Yarn, is going to be presented by our engineers Bismah Babar and Ahmed Shahid. They're both software engineers who have been working at Confiz for a couple of years and both are experienced in their fields. So for a couple of rules, if you have any questions during the presentation, you can unmute your mic and ask. But at the end of the session, we are going to have a short question and answer segment in which you can ask your questions and have discussions with the presenters. So let's move to today's session. Our first presenter is Bismah. So Bismah, over to you. Thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you. So my name is Bismah, and so in the previous two sessions, we focused on Hadoop's distributed file system. We saw how read, write, delete operations are happening there, how replication is handled. So now we will be looking at Hadoop's cluster resource management tool called Yarn, which literally stands for Yet Another Resource Negotiator. So just to set a little bit of context. So during the dot-com bubble, which happened between the late 1990s and early 2000s, cheaper hard disks were being produced, which meant a lot of data was being produced. So there was a huge abundance of data. So उसकी वजह से जो the traditional ways to extract information from data, to analyze data was proving to be too much effort because the data had to be brought to the processing unit. So this was proving to be too much of a manual effort. So the solution to that was to bring the processing unit to the data. So this brought rise to MapReduce. So MapReduce is a software framework and programming model used for processing huge amounts of data. So just to give a quick overview of MapReduce. So this is a small problem where we want to count the occurrence of each word in a text, and we're assuming कि हमारा बहुत बड़ा कोई text है. So the first step in MapReduce is to split the data into smaller chunks. So which we call input splits. So the data is split into smaller chunks, and then it goes into a mapper function, which maps each word to a certain value. So in this case, because we want to count how many words are occurring in the text, so we just assign a value 1 to each word. And then the next step is to shuffle the data. जिसके अंदर हम basically जो keys हैं हमारी उनको हम combine कर देते हैं and we combine the values, and then the next step is to reduce the values or aggregate the values. So in our case we want the sum of these values ताकि हमें total count मिल जाए of each word occurring in the text, and then eventually we get the final result where we have a list of all the words occurring with their counts. So this, in the first version of Hadoop, what MapReduce was doing, it was focusing on cluster resource management as well as data processing. वो दोनों काम जो है वो एक मतलब MapReduce ही कर रहा होता था. So this brought rise to certain problems. There were certain limitations because of this. So Hadoop 1.0 became limited to running only MapReduce jobs. So other types of jobs, for example, graph processing, iterative computing, stream processing, वो नहीं चल सकती थी Hadoop 1.0. And then MapReduce is batch-based, so it isn't suited for real-time or even near real-time data processing. The utilization of resources was inefficient. This was because MapReduce MapReduce V1 work was कि वो resources इस तरह से allocate करता था कि map task के लिए certain slots allocate हो जाते थे और reduce task के लिए अलग से slots allocate हो जाते थे. So if we have a number of map tasks जो कि उन्होंने सारी map slots occupy किए and then there are also some pending map tasks, they will not be able to use the reduce slots.
and जब तक map tasks जो पूरे नहीं हो जाते हैं until the map slots aren't free, जो pending map tasks हैं वो तब तक मतलब pending में ही रहेंगे, and they will not be able to use the reduced slots. So this was because of this there was an inefficient utilization of resources. So this brought rise to Hadoop 2.0, which basically separated Yarn, which basically separated the cluster resource management and the data processing. So the cluster resource management was now handled by Yarn. Yarn is Hadoop's cluster resource management system. It took over the task of cluster management from MapReduce. So MapReduce became streamlined to perform data processing only. So MapReduce जो है वो सिर्फ data processing के ऊपर focus कर सकता था, whereas Yarn was handling all the resource allocation on the cluster. So Yarn provides APIs for requesting and working with cluster resources. And now because resource management was separate from data processing, so other higher level APIs, other data processing frameworks could be used on top of Yarn, for example, Apache Spark, Pig, Tez, etc. So, and then even though Yarn provides APIs for requesting and working with cluster resources, users prefer writing our applications in higher level APIs for distributed computing frameworks because this provides an abstraction, and so we don't have to worry about communicating with Yarn and its resources. So it's easier to write our applications for this. Okay. Moving on. So let's dive deeper into Yarn itself and see what's happening. So Yarn has a master-slave architecture. The master node of Yarn has the resource manager, whereas the slave nodes contain the node managers. So the resource manager is responsible for the allocation of the overall cluster resources. It has many components, but in this session today, we are only going to be focused on the two main components of resource manager, which are the application manager and the scheduler. And then on the slave nodes, we have the node manager, which is responsible for allocation of resources on its respective node. So just node पे वो node manager present होगा, उसकी resource allocation जो है, उस node के ऊपर वो it will manage and it will monitor the resources on that specific node. And then we have the concept of containers. I'll discuss this later. And there is also an application master present on the slave nodes. So, and then all of these components on the slave nodes are communicating with the resource manager as well. So some terminology that I want to share, Yarn specific terminology. So there's the concept of vCores, which is a usage share of a CPU core. It is usually equal to the number of cores available. However, for less I/O intensive tasks, we can increase the ratio of vCores to physical cores higher than 1. So is in this image, हम देख सकते हैं कि there are 4 physical vCores. And we divided it up into basically 8 vCores. So her core पे जो है वो 2 vCores है. And then there's memory, which is basically RAM, and then there's the concept of containers in Yarn. So containers are a request to hold resources on the Yarn cluster. It's a collection of physical resources. There can be multiple containers on one node. And we can run processes in containers. It can be a Linux process or a Python application. In this image, we can see that ये हमारा container and it's requested 1 vCore and 8 GB of memory, and then eventually it's running a process and then an application is just a Yarn client program that is made up of one or more tasks. Is there any questions? जी, this is Claire. I have a question. So जब हम vCores define कर रहे हैं तो basically हम उसकी compute power को share करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये कैसे decide कर रहे होते हैं कि एक vCore को कितनी compute power मिल रही होगी, like
जो yarn है वो उसको लिमिटाइज कैसे कर रहा होता है? ये हम जो है ये जब हम yarn की configuration सेट करते हैं, so we set उसके अंदर जो है हम सेट करते हैं कि हमें इस तरह की मतलब this is the distribution we want of the vectors. So it's basically कि आपको कितनी parallelism चाहिए अपनी applications में. So for example Spark में जो है हम अपना data जो है वो distribute करते हैं. We have a data and then we want to distribute it on different nodes and clusters, and we also want to increase the parallelism. तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी पैरेललिज्म चाहिए अपने डेटा के लिए, कि कितनी थ्रेड्स में बेसिकली हमने डिवाइड करना है अपना डेटा. डज दैट मेक सेंस? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था लाइक से कि हमने एक कोर के अंदर 2 वी कोर्स कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, तो अब जो हमारा एक्चुअल फिजिकल कोर है उसकी कंप्यूट कैपेसिटी इन दोनों के अंदर इक्वल डिवाइड हो रही होगी. लेट्स से कि अगर ये हमारा फिजिकल कोर 50% यूटिलाइज, बल्कि हमारा वी कोर एक 50% यूटिलाइज हो रहा है, तो हमारा जो एक्चुअल कोर है वो 25% हो रहा होगा. So for example हमारी एक कोर जो है हम कहते हैं हम it's 16 GB, तो हर वी कोर जो है it will be like divide हो जाएगी 8 GB में, right? So अगर एक वी कोर जो है हमारी यूटिलाइज हो रही है, so yes वो 50% ऑफ द कोर जो है वो हमारी यूटिलाइज हो रही है. जुबैर, मेरे ख्याल में कोर्स का जो इस तरह की डिवीजन है ये इतनी सिंपल नहीं होती, इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स. ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा, इट्स हार्ड टू टेल, लेकिन आपकी अप्रोक्सीमेशन में भी ठीक हो सकती है. इट वुड बी अराउंड द सर्वर, ये एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग है. इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स के वर्चुअल कोर्स कैसे काम करती हैं. आपकी एक्सपेक्टेशन कुड बी व्हाट यू आर सेइंग, लाइक इफ out of one core I'm making 2 V cores, I should have 50%, but I think there's a lot more complexity in there. Just Thank you. I want to add, Zubair, normally when you are setting up your Hadoop cluster, तो उसमें when you are planning your cluster based on your use cases, because thing is कि once you have set up a cluster, उसके बाद जब आप distribution resources कर दी, तो it's until Hadoop 2.0 it's not dynamic, it's not easy to reallocate things. तो normally उसमें when you are tuning your cluster, तो उसमें आप you decide. अब उसमें normally होता है आपका जो question था, जो आपके तमाम machines के मिलके जितने भी cores available होके ना, that they create one like overall cores available to your cluster, and then आप उसमें देखते हैं कि जी अच्छा मेरे you have to leave some cores for your master slaves. Let's say Hadoop के अंदर आपका name node था, data nodes, right? Name node, secondary node के चाहिए, फिर you need something for John master node के लिए. उन machines पे जहाँ वो आपके वो components run होते हैं, you don't divide उनको उन कोर्स को आप डिवाइड नहीं, वर्चुअल कोर्स में डिवाइड नहीं करते. आपके नॉर्मली ये जो स्लेव नोड्स हैं जिन पे आपके लेट्स से नोड मैनेजर्स चल रहे हैं, सॉरी उनको आप ये डिफाइन करते हैं कि यार मेरा लोड कितना होगा जॉब्स का, राइट? हाउ मेनी स्पार्क जॉब्स, हाउ मेनी डेज जॉब्स आई विल बी रनिंग, और देयर इज अदर और भी फ्रेमवर्क्स हैं अदर देन, एंड देन you decide कि यार अच्छा मेरा इस क्लस्टर में कितनी करनी है, then you उसके बेसिस पे you decide कि यार अच्छा इतने कोर्स मेरी स्पार्क ले लेगा, then I have to reserve those course, the rest of the course for my MapReduce jobs and Hive jobs, and then rest for my Presto jobs, stuff like that, right? So it's all part of your cluster setup. उसमें as Asin said, that's not easy, because you need to understand कि आपके use cases कैसे होंगे beforehand, data किस type का है, you need to really understand that आपका वो usages क्या होंगी, and you have to plan according to that कि मेरी data की growth कितनी होगी. जी, I got the question actually, answer sorry, कि मतलब ये बिल्कुल सिंपल नहीं है, ऐसे एप्पल टू एप्पल और समथिंग इस तरह की मैपिंग नहीं है between the actual physical cores and V cores. I got that. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, so moving on. So now we will focus on the resource manager. So as I mentioned before, the resource manager has many components to it, but we will be focusing mostly on the application manager and the yarn scheduler.
So the resource manager is the master daemon of Yarn. It keeps a record of all the resources used and free among all the application or the whole cluster. It also aims to optimize cluster resources and keeps all cluster resources in use. And it is the ultimate authority in resource allocation. It has two main components, which is the scheduler and the application manager. So अब हम application manager के ऊपर focus करते हैं. So the application manager is responsible for accepting job submissions. So जब भी कोई client जो है वो application submit करता है, so that it is the job of the application manager to accept those jobs, and then it is also it also negotiates the first container from the resource manager for executing an application specific application master. So her application के सारे application master associated होते हैं, and it's the job of the application manager to make sure that when a job is submitted, the it negotiates resources from the resource manager to launch the application master. We'll talk more about the application master later, and it manages all the application masters and provides services for restarting the application master in case of failure. So जो भी जितने भी application masters जो हैं वो cluster में run हो रहे हैं against each application, it is the job of the application manager to keep a track of them and to monitor them. Next we move on to the node manager. जो हमारे slave workers पे जो है वो मौजूद होता है, it is the slave daemon of Yarn. It is present on each worker's or slave node, and it monitors resource usage of the node it is present on and reports it back to the resource manager. It also sends heartbeat with the health status of the node. So it sends heartbeats to the resource manager to make sure the resource manager को पता हो कि it's alive, and if it is killed or it fails, resource manager को पता हो कि okay, so this node has gone down, I need to allocate resources accordingly. The node manager also creates and kills containers on the request of the application master and the resource manager. Moving on to the application master. So the application master is responsible for the entire life cycle of the distributed application. It is the application master is launched on the worker nodes. There is one application master associated with each application. It negotiates resources from the resource manager, and it works with the node manager for allocating containers. So resource manage so the application master basically negotiates resources on the resource manager, and then it asks the node manager on जो हर node पे present होता है, it asks the node manager to allocate the container that it needs, and it's also the first process that is run when an application is started. So now I will be handing control over to Ahmed. He will be going over the rest of the content. Ahmed, over to you. So if anyone has any questions about the session up till now, they can ask. Otherwise, Ahmed, you can start with your part of the presentation. Is my screen visible? Yes, it's visible. You can start the PowerPoint presentation. Yes, I'm going to start the slideshow. Okay. Yarn के जो मेन काम है उसका काम है कि Hadoop का जो distributed file system है उसके ऊपर different applications को execution. So application execution is actually the main functionality of Yarn. Moving on to the application execution steps. The first step is that an application is submitted by a Yarn client. Examples of Yarn clients are Spark, Hive, Pig, and once the application is submitted, the resource manager requests the node manager to launch the application master in a container. Once the application master is up, it requests the node manager to launch the specific task containers to execute its tasks. Next up, the
application master requests multiple task containers from the resource manager, and then the resource manager launches these respective tasks in containers on specific node managers. अब इसमें ऐसे होता है कि टास्क्स के जो कंटेनर्स है वो एलोकेट होते हैं, और फिर वो जैसे उनकी उनकी खत्म होती है एग्जीक्यूशन, उनकी लाइफ साइकिल फिनिश होती है, तो जो उनके कंटेनर्स होते हैं वो नोड मैनेजर किल कर देता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन मास्टर का कंटेनर भी किल होता है। इस तरह यार्न का जो क्लस्टर होता है उसके रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं, और दिस इज द एंड ऑफ द एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। एक लॉजिकल पिक्चर के बाद अब हम एक फिजिकल पिक्चर ऑफ द एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लाइंट होगा जो एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा टू द यार्न रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर आगे से एप्लीकेशन मास्टर को लॉन्च करने की रिक्वेस्ट भेजेगा, तो एक नोड मैनेजर एक कंटेनर पे लॉन्च करेगा, और वो एप्लीकेशन मास्टर फिर रिसोर्स मैनेजर से एप्लीकेशन के डिफरेंट टास्क के लिए कंटेनर्स की रिक्वेस्ट करेगा, और वो फिर अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होंगे। मतलब जो पीछे स्टेप्स थे उनकी एक फिजिकल पिक्चर यहाँ पर है। नेक्स्ट हम लोग यार्न का एक और कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जो कि पीछे हमने स्टेट किया, लेकिन उसको हम यहाँ पे आकर डिस्कस करेंगे, विच इज द स्केड्यूलर इन यार्न। अच्छा, इसके साथ ना मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज ये कि द स्केड्यूलर इज द पार्ट ऑफ द रिसोर्स मैनेजर विच इज द मास्टर डीमन ऑफ यार्न। मतलब कि स्केड्यूलर इज द मास्टर इज अ पार्ट ऑफ द मास्टर डीमन ऑफ यार्न। अब इसके बाद एक आता है क्वेश्चन कि जब भी हम लोग रियल लाइफ में कोई भी चीजें हम लोग स्केड्यूल करते हैं, कोई भी रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं, तो उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर आता है ज़हन में। कैन एनीवन आंसर दैट? सॉरी, क्वेश्चन एक दफा रिपीट करते हैं प्लीज। क्वेश्चन ये था कि रिसोर्स एलोकेशन के लिए एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, तो जो कि इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी यूज होता है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है इससे जो हम लोग स्केड्यूलिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं? मेरे ख्याल में आप ही बता दें तो अच्छा हो। अच्छा, इसका सिंपल सा आंसर इट इज अ क्यू। जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी एक क्यू होती है, क्योंकि एक जो रिसोर्स होती है उसको मल्टीपल चीजों ने एक्सेस करना होता है, तो उन सबको एक क्यू में रखा जाता है कि एंड क्यू ऑपरेट्स इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। तो स्केड्यूलर का भी मेन कंपोनेंट जो है जिसके थ्रू वो स्केड्यूलिंग करता है, इट इज अ क्यू एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द रिसोर्स मैनेजर एज आई स्टेटेड बिफोर। scheduler, the yarn scheduler is a pure scheduler। मतलब इसने सिर्फ जो है ना रिसोर्सेज क्लस्टर के इनको इसने कहते हैं एलोकेट, उसके बाद इसने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जो नोड मैनेजर और रिसोर्स मैनेजर है उन्होंने एप्लीकेशन का स्टेटस और फेल्ड कंटेनर्स और किल्ड कंटेनर्स और नोड्स के जो हेल्थ है उसको मैनेज करना है। स्केड्यूलर ने सिर्फ इनको एलोकेट करना है और उसके बाद इसने खत्म हो जाना है। मतलब खत्म इस तरह होना है कि इसके बाद कोई मजीद इसका कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट है कि इसकी एक कोर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि सिंस यार्न इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सो इट इज सपोज टू रन ऑन द क्लस्टर। तो जब इसको मजीद रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं तो इट इज द स्केड्यूलर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलिंग आउट द यार्न क्लस्टर। Next, we will move on to yarn scheduler policies. There are three policies currently that can be configured on yarn. The first is the first in first out capacity scheduling and the fair share scheduling, which is recommended by Cloudera. A deep dive into the yarn scheduler policies. First is the first in first out scheduling. ये basic उसका नाम जो imply करता है कि जिस order में job submit होंगी उसी order में execute होंगी। कोई लॉन्ग जॉब स्टार्ट में सबमिट हो सकती है और फिर उसके बाद शॉर्ट जॉब सबमिट हो सकती है, तो शॉर्ट जॉब स्टार्ट होगी। एंड दिस इज द बेसिक मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्केड्यूलिंग। नेक्स्ट इज द कैपेसिटी स्केड्यूलिंग। इसमें होता है कि हम लोग ना मल्टीपल क्यूज के दरमियान ना अपने क्लस्टर की रिसोर्सेज को हम डिवाइड कर देते हैं। हर क्यू को एक परसेंटेज एलोकेटेड होती है। जैसे अगर हम लोग इसमें देखें इस डायग्राम में, क्यू ए हैज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्लस्टर and QB is almost 10% of the cluster। तो जब जॉब कोई सबमिट होगी क्यू
ए में तो उसको 90% ऑफ द क्लस्टर रिसोर्सेज गारंटीड मिल जाएंगे, और फिर क्यू बी को और फिर जब क्यू बी में कोई सबमिट होगी तो फिर क्यू बी को उसके 10% मिल जाएंगे और वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें यह है कि अगर क्यू ए में एक टाइम पे दो जॉब्स आ जाती है तो दे विल बी एग्जीक्यूटेड इन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, कि फर्स्ट जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी, उसकी खत्म होने के बाद फिर क्यू ए की दूसरी होगी। क्यूज की बेसिक जो है इट इज स्टिल द सेम ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड द लास्ट इज द फेयर शेड्यूलिंग, द रिकमेंडेड शेड्यूलिंग. This operates in a very different manner. इसमें ये होता है कि एप्लीकेशन जब सबमिट होती है ना तो उस टाइम पे देखा जाता है कि क्लस्टर की रिसोर्सेज की स्टेट क्या है, उस हिसाब से उसकी क्यू का एक फेयर शेयर कैलकुलेट हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन की रिसोर्सेज एलोकेट हो जाती हैं और फिर एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। इसमें आगे हम लोग अभी थोड़े से डीप डाइव करेंगे, तो मैं एग्जांपल इस ग्राफ को इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा। अब हम लोग फेयर स्केजुलिंग की लेंगे एग्जांपल। जो फेयर स्केजुलिंग होती है इसमें हर चीज ना क्यू के वेट पे डिपेंड करती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें मार्केटिंग का वेट 3 है, असल में इस अगर हम लोग देखें डायग्राम को तो हायर क्यू का एक पेरेंट क्यू है और जो आखिरी 3 क्यूज हैं सेल्स, मार्केटिंग और डेटा साइंस, इनका पेरेंट क्यू है रूट। ये दोनों रूट से डिसाइड करती हैं और फिर नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका और यूरोप सेल से करती हैं, वेबसाइट और रिपोर्ट्स मार्केटिंग से करती हैं और शॉर्ट जॉब्स और बेस्ट एफर्ट जॉब्स ये करती हैं फ्रॉम डेटा साइंस। इन हर क्यू के साथ हमने एक वेट एलोकेट किया हुआ है। दिस वेट इज एक्चुअली जिसकी बेस पे इस क्यू का फेयर शेयर कैलकुलेट होगा इन द क्लस्टर। ये भी हम आगे देखेंगे अभी। द फेयर शेयर अब हम एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे कि एक क्यू का इस एग्जांपल में फेयर शेयर क्या बनता है। इसका ये एक थोड़ा सा खौफनाक सा फॉर्मूला है कि हम लोग जो क्यू का वेट है वो उसको डिवाइड करते हैं टोटल वेट पे जो उसके सिबलिंग्स को और उसका मिला के होता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द परसेंटेज ऑफ द फेयर शेयर ऑफ द क्यू। अब अगर हम लोग एग्जांपल में से देखें तो सेल्स का 20% बनता है, मार्केटिंग का 15% बनता है और डेटा साइंस का 65% बनता है। अब हमने फेयर शेयर की फॉर्मूला डिफरेंट है। आई थिंक फॉर्मूला इज वेट ऑफ द क्यूज डिवाइडेड बाय ऑल वेट्स, because I think 20 I think is the sum of all weights, not just the sibling queues, or you are no it's only the sibling queues. It's 4 plus 3 plus 13, that's 20. So 20 is the weight of all queues or the all weights of 20 is the sum of weights of the sibling queues. मतलब ये ना रूट से जो डिसेंड कर रही है ना क्यूज उनके वो 3 है। अगर हम लोग पिछले डायग्राम में देखें ना इसके 3 क्यूज हैं, सेल्स, मार्केटिंग और डेटा साइंस। तो इनका जो सम ऑफ वेट्स बनता है ना, ये 3 सिबलिंग्स हैं, इनका सम ऑफ वेट्स 20 बनता है, 3 plus 14 plus 13। ठीक है, आप और मैं एक ही बात करें इसमें। ठीक है, अब इसमें यह है कि ये जो परसेंटेज की कैलकुलेशन तो होगी, तो फिर परसेंटेज एग्जैक्टली है किस चीज के, मतलब फिर शेयर है किस चीज का, शेयर उसको किस चीज का मिलेगा। तो शेयर इज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द पेरेंट क्यू। इन 3 क्यूज का पेरेंट क्यू है रूट, तो इनका पेरेंट होगा इन ये मतलब कि सेल्स को रूट की रिसोर्सेज की 20% रिसोर्सेज एलोकेट होंगी जब सेल्स में कोई जॉब सबमिट होगी। इसी तरह मार्केटिंग को रूट की रिसोर्सेज में से 15% रिसोर्सेज एलोकेट होंगी when a job is placed in the marketing queue. नेक्स्ट हम आते हैं, सिंस हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिर्फ इतना नहीं था, हमारे इसमें मजीद भी थी, नेक्स्ट लेवल ऑफ चिल्ड्रन भी थे, तो अब हम लोग उनके लिए भी सेम एग्जैक्ट है फॉर्मूला। और फ्रॉम द एग्जांपल हम लोग सेल्स के अंदर से दोनों क्यूज को निकाला, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, और इनके हमने फेयर शेयर्स कैलकुलेट किए हैं, दोनों के 50% आए हैं। रिपोर्ट्स और वेबसाइट मार्केटिंग से करती है डिसेंट 67 और 33%, और शॉर्ट जॉब्स के 100% और बेस्ट एफर्ट जॉब्स का 0% होता है। अब जैसा पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो रूट का था, अब नॉर्थ अमेरिका को सेल्स का 50% शेयर मिलेगा ऑफ द रिसोर्सेज ऐसे। नेक्स्ट मार्केटिंग का भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा कि रिपोर्ट्स को मार्केटिंग के फेयर शेयर में से 67% शेयर एलोकेटेड होगा और वेबसाइट को 33%। इसी तरह शॉर्ट जॉब्स और बेस्ट एफर्ट जॉब्स को डेटा साइंस का एलोकेशन होगी। अब इसमें एक चीज है, so it seems like we have queues within queue. It seems like because अगर
आपने 20% वेट एक आपने उसको दे दिया है लेट्स से डेटा साइंस को, अगर उसमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाती हैं वो सारी within जो डेटा साइंस क्यू हो जाएंगी, तो it seems to me these are queues within a queue. Yep, it is a queue within a queue. मतलब हमारा पीछे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें ना, इन दी XML वो ऐसे डिक्लेयर हुआ होगा. First there is a queue, we declare a weight, then there is the sub queue in it, then the weight of the sub queue, and then this another sub queue and then the weight of that. तो ये हमारा टोटली इसी तरह है, मतलब हमारे 3 क्यूज हैं जो रूट से डिसेंड कर रही हैं, और उसके आगे हर क्यू के आगे 2 और क्यूज हैं. अच्छा, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा. इज दिस क्यूइंग सिस्टम built in here or we have to use an external queue system, maybe like an MQ or a message queue to take care of this? It is built in Yarn. अच्छा, ये this is not like a messaging queue. This is queues. It's one of the ways कि आपने resource distribution करनी है on your cluster. The idea is because I think if you go for default, that's a kind of a hungry algorithm. उसमें ये होता है कि जी the first job, अगर आपने उसमें if you haven't उसमें आपने अगर उसको बताया नहीं कि how much resources की upper limit define नहीं की इस job paper, then it will go in and consume all the resources available to it. And probably when you submit a second job, to depending के कितने resources उसने पहली job ने use कर ली हैं, probably might not have enough resources for the second job. The second jobs आपकी by jobs I mean it could be MapReduce jobs and your other applications which need resources on your cluster. So you can't submit your second applications on the cluster to run. So आपको you have to, for example, when we are using John, and so we have to do these things ourselves. So उसमें ये होता है कि जो आपका एक cluster है, the main idea is because you have one cluster per department wise, per organization, depends how your किस तरह आपके चल रहे हैं. But even if you're department wise, then you say कि you need to allocate resources कि यार इस department की कुछ jobs हैं, ये वाला जो probably teams and they have higher priority over other priorities, so you allocate more sources for their jobs, and then for other teams you allocate less resources. And then the jobs, the teams have to use these jobs अपनी queues में उनको they can only use submit their jobs within those queues, or in those queues में this is what Ahmed is telling is further division के within like एक sub department के अंदर और teams उनको आपने allocate कर दिया है. So the idea is कि when you are sharing resources, the teams won't step on each other's toes in terms of resources. So you allocate resources, and then those are fixed. So जो किसी भी team को use करने होंगे, तो they can only use the resources allocated to them. They can't so that अगर team A को ज़्यादा resources चाहिए, थोड़ा अगर आपने resource allocations नहीं की हुई, तो they can go in and probably consume all the resources available in the cluster, which means that team B can't run their applications. So two follow-up questions. So makes sense. So what you're saying makes sense to me. So I have two follow-up questions. A, what if the system crashes right in the middle? What happens to all the jobs? Because it seems to me this is an in-memory queuing system. It seems to me all the jobs will be lost. No, these are only this is not a resource because this is fixed, not in memory. So all when you set up your cluster, तो उसमें you allocate resources कि ये queues होंगी for this team, and this is only for resource allocations. This is not कि इसका job से तरफ. It means कि when you're submitting an application, they have to negotiate. They tell the resource manager, I need 6 cores. I need 72 GB of memory. Do you have that available? And resource manager say कि मेरे पास नहीं है, so jobs will not run. They will go in and basically suspend this state until they wait for their the resources to be available. If इसका बस resource managers का queues का यही काम है कि when you start your jobs has to negotiate for resources. Once वो jobs के पर resources आ गए, then basically it's just heartbeats कि जी वो I think जिसे उन्होंने पहले life cycle बताया था. So this is nothing to मतलब it's not memory. Is this जो ये बता रहे हैं, this is only when you start your job, तो
तो वो जो negotiation होनी है वो किन rules की base पे होनी है between your job and the cluster resource manager. Okay. Do I continue? Yes, sir. So lastly इसमें एक एज केस इसको कह सकते हैं कि हम लोग एक क्यू को अगर हम लोग एक 0 वेट अलॉट करें तो उसको तो 0% शेयर मिलेगा, तो व्हाट इफ अ जॉब इज सबमिटेड इन दैट क्यू, तो वो कब एग्जीक्यूट होगी? तो 0 का असल मतलब ये है कि इस क्यू में असल में वो जॉब्स प्लेस होती हैं जो कि सबसे लॉन्ग रिटर्निंग होती हैं, और और 0 का मतलब ये होता है कि इस जॉब ने तब एग्जीक्यूट होना है when there are free cluster resources to execute this job. मतलब अगर इस क्यू में कोई जॉब आती है और क्लस्टर की रिसोर्सेज ऑलरेडी यूज हो रही हैं तो इसको कुछ भी एलोकेशन नहीं होगी, ये वेट करती रहेगी, और जब क्लस्टर में कुछ फ्री होगा तो फिर इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और फिर ये रन करती जाएगी इसी फैशन में। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा फिजिकल एलोकेशंस को डिस्कस करें तो हम सपोज करते हैं कि द टोटल कैपेसिटी of the cluster is 120 GB memory and we have 60 vcores and the total sum of weights for the root queue is 20. तो जैसे हमने पीछे परसेंटेज कैलकुलेट की थी उसी तरह एग्जैक्टली हम weight of the queue divided by sum of weights times the memory of the parent queue से हम मल्टीप्लाई करके उसकी मेमोरी निकाल लेंगे और vcores निकाल लेंगे, और इसी तरह चाइल्ड क्यूज के लिए भी एग्जैक्टली सेम होगी कैलकुलेशन के उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सिबलिंग्स times the share of the parent memory and the parent vcores. इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो बेस्ट एफर्ट जॉब्स को 0 GB मेमोरी और 0 vcores मिल रहे हैं, तो 0 मींस एग्जैक्टली द सेम थिंग कि इस क्यू में जॉब तब एग्जीक्यूट होगी when there are spare resources in the cluster. नेक्स्ट क्यूज तो हो गई डिस्कस, सब कुछ हो गया डिसाइड। अब लास्ट ये था कि एक जॉब सबमिट हुई है तो which queue will that job go to? This is actually what is done by the queue placement policy. It is a sequence of rules which places a job in a queue. इसमें हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक क्यू क्रिएट नहीं हुई तो उसको क्रिएट करना है या नहीं, और ये कि क्यू प्लेसमेंट पॉलिसी में जब एक जॉब सबमिट होती है तो उस पर रूल्स अप्लाई होते हैं जो हमने डिफाइन किए होते हैं। उन रूल्स की एग्जीक्यूशन इस तरह होती है कि अगर फर्स्ट रूल पे जॉब एलोकेट हो गई तो हो गई, उसने नेक्स्ट रूल पे नहीं जाना, अगर वो फर्स्ट पे नहीं होती वो नेक्स्ट पे आती है, अगर उस पे भी नहीं होती तो नेक्स्ट पे आती है। तो फिर इस तरह लास्ट रूल की ये होती है कि लास्ट रूल पे आके द जॉब मस्ट बी सबमिटेड और नॉट बी सबमिटेड। तो इसी वजह से लास्ट रूल इज ईदर द डिफॉल्ट और द रिजेक्ट रूल के डिफॉल्ट में होता है कि या तो सबमिट हो जाएगी या फिर नहीं होगी, और जो रिजेक्ट है इसका मतलब है कि इस रूल पे आके इस जॉब ने यार्न में सबमिट ही नहीं होना। नेक्स्ट रूल्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? रूल्स के लिए यार्न डिफरेंट टेम्पलेट्स देता है व्हिच आर स्पेसिफाइड यूजर, प्राइमरी ग्रुप, नेस्टेड यूजर क्यू, डिफॉल्ट एंड रिजेक्ट। लास्ट टू आर द रूल्स जिनके बगैर हमारी क्यू प्लेसमेंट पॉलिसी हो ही नहीं सकती। और अगर हम कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर ना करें तो हमारी एक पॉलिसी बन जाती है बाय डिफॉल्ट, उसमें एक डिफॉल्ट रूल होता है बस। नेक्स्ट इज हाउ डज स्पार्क work with Yarn. Spark is a cloud computing framework for batch and stream processing, which was designed for fast in-memory calculations. Spark can be run on top of its own standalone cluster or upon different clusters such as Mesos, Kubernetes, or Yarn. In the demo, we will be seeing how Spark runs with Yarn. Next up is an overview of the Spark components. Spark का भी एक master slave architecture होता है. Driver is the user code. इसमें एक driver की class which is the user code, and it is the main program of an application. Next is the Spark context, which is the entry point into Spark functionality. जितने भी Spark के काम होते हैं वो सारे हम Spark context के through करते हैं. उसके बाद next thing are the executors, which are actually the tasks which are executed by the driver program. Next is yep.
अच्छा, इसमें ये है कि Spark can run into modes, client and cluster mode. सबसे पहले कि क्लस्टर मोड में होता है कि जब स्पार्क की कोई जॉब सबमिट होती है तो उसका जो ड्राइवर होता है वो एक सेपरेट जगह पे रन होता है और जो उसके जो टास्क होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो इसमें होता है कि अगर ड्राइवर की एग्जीक्यूशन हम खत्म भी कर देते हैं तो द जॉब कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट। और क्लाइंट मोड में होता है कि ड्राइवर इज कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट विद the driver is launched on the client, which is why the client exits or disconnects, the application will fail to run as well. Now we will move on to the demo. डेमो में हम लोग स्पार्क की जॉब सबमिट करेंगे ऑन द yarn क्लस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने yarn को कॉन्फ़िगर किया हुआ है फॉर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्केड्यूलर। इस पे अगर हम लोग जॉब सबमिट करेंगे तो दे विल बी एग्जीक्यूटेड इन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। मतलब अगर हम लोग दो जॉब्स को इकट्ठे इस पे भेज दें तो दे विल नॉट एग्जीक्यूट टुगेदर। Okay, so before the demo, let's see if we have anything from the audience. Any questions or discussions? Amir, आपका question, what do you mean by cloud computing? Do you mean like can it run on cloud or? So I saw this this word in Spark definition. So I was a bit confused. So how mean by cloud framework? Spark असल में एक distributed framework होता है, which is why it is called a cloud computing framework, and it is also deployable. जिस तरह यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे Spark deployed होगा जिसपे Spark के समय application submit होंगे. This is also deployable on the cloud. It is also configurable on the cloud. Actually, I think by cloud computing, that what probably meant was कि Spark जो है just that they mentioned that you can have its own cluster standalone, but that's not advisable. That's not production ready, so it's not advisable to run it. So the normal way is that if you in productions, either you use the cloud providers distribution of, for example, अगर हम Azure में बात करें, they have HT inside, they have Databricks. In Google, they called it Dataproc, so which is actually a Spark cluster, which is run using Yarn. Similarly, अगर आप जैसे Databricks हम Azure में बात करते हैं, या HT inside again in Azure, it's again a Spark cluster run using Yarn. So उसमें the only thing is कि वो elastic scale है, you can add nodes and move nodes, जो कि आपको एक अगर in-house built cluster में होगा, that's difficult to do. So I think that's the. Okay. Thank you. Okay, so Yarn cluster is configured to run for the FIFO queue. We are going to submit a Spark shell with the driver memory of 2 GB and an executor memory of 6 GB. And now it is going to start.
अब हम लोग स्केला के कोई भी इसमें स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को यूज करके we can run tasks on the Scala shell. जिस तरह मैंने अगर कोई एक फाइल जो HDFS में पड़ी हुई है उसको रीड करना है तो this is what I will do. And if we move on to the Yarn UI, अगर हम लोग scheduler में जाएं तो we will see कि 100% of the resources are allocated. So if we submit another job, it won't be executed. It will go in the waiting state. तो अगर हम लोग एग्जैक्टली यही काम एक और जगह से हम लोग एक और स्पार्क शेल सबमिट करें, ऐसे इंस्टेड ऑफ द स्पार्क शेल हम एक जार फाइल इसको सबमिट करते हैं। ये छोटे छोटे से प्रोग्राम हैं। हाँ, ये अगर हम लोग एक जॉब सबमिट करते हैं इसको थ्रू अ जार फाइल, तो Either आपकी screen freeze हो गई है या some long process is going on. We don't see any updates. Yeah, we lost Ahmed. I think he dropped out. Maybe it's मेरे connected. ख्याल में उनकी जॉब ने Zoom के रिसोर्स पे ले लिए हैं over allocation. Let's see. Let me just reach out to him and ask. Meanwhile, Tajal, can you share कि ये सारी videos हम YouTube channel पे कब upload करेंगे? So all the sessions we just had in this week or last week. You were speaking on mute. We could not hear anything. I'm sorry. So 2 of the videos are already up on the Confiz YouTube channel, the first 2 sessions that we had, and the rest I will have them uploaded today. And how do we cross-market them? So A, are we tagging them? And B, how do we cross-market them across Facebook and LinkedIn or Twitter? So we are going to share links on Facebook and LinkedIn, etc. And we're also using hashtags to find the videos, etc. I will discuss this with Masuma more, so that we can have more audience on those videos. So yeah, I've been asking her and now kind of pushing her to have separate social media pages for our learning platform. So something like Confiz University or Learning at Confiz.
So you Yeah. can have independent control over what you want to post there, because I think on the corporate page, they do want to mix it up with learning updates and other company updates, and that just limits our ability to use social media in all the sessions we are having. So I'm Yes. actually Okay. pushing her now to create those pages for us, and hopefully I think we're going to get them soon. If Yeah, that you, so makes there's a sense. company in Karachi. Mhm. Yeah, please go ahead. No, so yeah, I did discuss this with her. So she did think it's a good idea because our social media, she says, like it does get cluttered with so many sessions that we're having. So it is something that we are going to work on. What were you saying about the Karachi company? So Karachi, there's a company called 10 Pearls. It's around No. same size as Confiz, Mm-hmm. and they have a good learning culture. I actually met the guy who started all their learning initiatives, and they have separate social media presence by the name of 10 Pearls University. So Okay. yeah, and it's all about their sessions and everything. So yeah, because our program is to keep. So in recent discussion we had was around the people who come to these sessions. A month ago we had 100 people. Now it's down to 16 or 17. And while people Yeah. had ideas how to increase participation, my sense was that I maybe at then don't care. I care about good sessions, because if 10 people attend a very good session, that is way better than 100 people in a session which is not great or we won't learn much out of it. So I think essentially the number of people attending is just one metric. The Yeah, quality of the obviously. session and what people learn out of it is important as well. So I Yeah. think we are out of time. Maybe Ahmed can record a demo video and share with us. That will be pretty good. But Right. I think we can wrap up the session now. Yeah, he does say he's joining, but yeah, we are going to run out of time. He's here, by the way, like he's joined this chat. Let's see if we can wrap it up in like 5 to 7 minutes, or just give an Sounds good. overview. Then yeah, अगर अब उनका next time Zoom toast हो जाता तो I am pretty sure it's a resource issue. So let's see what happens now. okay. Ahmed, are you here with us? I see his name, but I don't think. No audio. He does not have any Yeah. audio. There is no mic symbol next to him. Yeah. I think probably next time we try to get some resources on cloud. So, Right. uh, Okay, then. So that was a VM. Ah, okay. I think that was a VM. So that's why it didn't work. Yeah. Yeah, I'll just. Chilanji, let's wrap it up. It was pretty good already. So yeah, we can have the demo Yeah, sometime we later. just missed the demo. So yeah, apologies for that, everyone. But yeah, thank you, Bismah and Ahmed, for presenting today. So this concludes the Big Data Week at Confiz. We had 6 really informative sessions, which were made lively by our presenters, engineers at Confiz, and also the audience who participated and asked questions, etc. So I would like to thank the audience and all the presenters who made the Big Data Week possible. I'd also like to thank Itizar Sheikh and Sanya Ashraf for stringing together this series and making Big Data a successful event. And also, I'd like to extend my thanks to you, SNSAF, for extending your support and having these learning sessions online during these difficult times. We did keep the learning curve active at Confiz. So good job, everyone. And I hope that upcoming at Confiz, we are going to have another series of events at the end of July. So stay tuned for that. We will be posting on social media, and we'll also be informing you over email about the upcoming leadership series. All the videos of the Big Data Week and the previous sessions are already up on YouTube, and we'll be putting up more videos as well. So you can check them out there. And that's it from the Big Data Week. Thanks, guys. It was good. Bye. Bye.
you. Allah Hafiz.